Hello everyone, I'm Dr. Madhvika Mathur. Welcome to next video on William Wordsworth. William Wordsworth, he was born in Cockermouth, Cumbria, in the Lake District of England. He met Coleridge in Bristol in the year 1795. Later, both of them published lyrical ballads in the year 1798. And a revised edition of this lyrical ballad came in the year 1800. That is 2 years after the publication of lyrical ballads. Two of them became the harbingers of the Romantic movement in English literature. Today, we will be focusing on an episode from William Wordsworth's childhood. That is the stolen boat. So the episode that we are discussing is the poem, The Stolen Boat. This poem is an abstract from an even longer poem called Prelude. So this was a long autobiographical poem of 8,400 lines. So Prelude कितनी लंबी poem है? एक बहुत ही लंबी 8,400 lines की poem है. In this analysis, we will look at the interaction between the nature and Wordsworth, and how this boat stealing episode in his early life left a mark on who he was to later become. So it is a description of the poet's life. And there were 8 episodes that Wordsworth has mentioned. 8 episodes Wordsworth ने mention किए हैं जो कि उनके स्कूल के दिनों के दौरान वो घटनाएं घटी थी और उनका बहुत ही गहरा असर उनके दिलो दिमाग पर हुआ था. So these episodes were during his school days at Hawkshead, and they took place during the year 1779 to 1787. अब वो कौन से 8 एपिसोड्स थे, कौन से 8 इंसिडेंट्स थे जिनका उनके जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा था. सबसे पहला बेदिंग, बर्ड स्नेयरिंग, बर्ड नेस्टिंग, द स्टोलन बोट, स्केटिंग, फिशिंग, kite flying, and home amusements. These are those 8 incidents about which he talks. These are his childhood incidents. और आगे जो ब्रैकेट में है वो लाइन नंबर है. This is the stolen boat from line number 357 to line number 400. So हर एक के आगे उनका लाइन नंबर दिया गया है. और इनमें से आज हम the stolen boat को डिस्कस करेंगे. अब ये घटना कौन से लेक पर हुई थी, कहाँ उन्होंने जाकर एक बोट को चुराया और किस लेक में जाकर उन्होंने बोटिंग एंजॉय करी थी, और बाद में जिसका हम देखते हैं कि किस तरह से नेचर उनको बताता है कि नहीं, तुमने जो किया है वो है एक गलत चीज है. So this incident had occurred on Lake Ullswater, Styborough Crag. Obviously, it is an autobiographical poem क्योंकि वर्ड्सवर्थ अपने खुद के बारे में, अपने बचपन की घटना के बारे में हमें बता रहे हैं. और अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो इसे फ्री वर्स आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है. So now I will begin with the analysis of the poem. हर स्लाइड में मैंने करीब 10 लाइन्स को एक साथ लिया है और there are 44 lines in this poem. So one summer evening, led by her, I found a little boat tied to a willow tree within a rocky cove, its usual home. So it was a summer evening, led by her. Led by her, her here is nature. So Wordsworth has personified nature as a female or as a lady. I found a little boat tied to a willow tree. So he found a boat which was tied to a tree, willow tree, within a rocky cave, its usual home. इससे हमें क्या मालूम पड़ता है? यूजुअल होम यानी ज्यादातर वो जगह वो थी जहां पर ये बोट हमेशा बंधी रहती थी. सो नेचर से इंस्पायर होके वो वहां पहुंचे, अपने आप नहीं. इट वाज दैट ही वाज इंस्पायर्ड बाय नेचर. Straight I unloosened her chain and stepping in, pushed from the shore.
Now you can see stepping in, pushed from the shore. So stepping in, pushed from the shore, ये जो है ये पूरा एक single sentence है, right? लेकिन हमने देखा कि कुछ words जो हैं sentence के next line में jump कर गए हैं. इसे enjambment कहते हैं. ENJAMBEMENT. So without thinking for a second, उन्होंने chain खोली and he pushed the boat from the shore. It was an act of steel and troubled pleasure. Trouble and pleasure, you can see these are two words that are contrary in meaning, right? These are contrasting words. So pleasure that he was about to row the boat. Troubled because he is aware that it is an act of stealth. हम देख रहे हैं दो शब्द जो आपस में विपरीत अर्थ के हैं वो साथ में आए हैं. ट्रबल उनको ये है कि उन्हें मन ही मन पता है कि वो चुरा रहे हैं बोट को, उन्होंने पूछा नहीं है, किसी से परमिशन नहीं ली है. प्लेजर कि वो अब बोट चलाएंगे, लेक में उसको सेल करेंगे. Nor without the voice of mountain echoes did my boat move on. So what did he do? He stole the boat and he started rowing it on the lake water, leaving behind her still on either side small circles glittering idly in the moon until they melted all into one track of sparkling light. So this is all imagery. While going through the line, you can very well imagine the thing. You can recreate the scene in your mind. How he is using the oars. कैसे वो oars से पानी में अपनी बोट को आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरह से जहां ओर पानी में टच होते हैं वहां पर स्मॉल सर्कल्स बन रहे हैं and they are glittering in the moonlit night. So this is a very beautiful description of how he started rowing the boat in the lake. Now from line number 11 to 20. But now, like one who rows, proud of his skill, to reach a chosen point with an unswerving line, I fixed my view upon the summit of a craggy ridge, the horizon's utmost boundary. Far above was nothing but the stars and the gray sky. So that trouble, there was something which was troubling him initially, कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैंने किसी से पूछा नहीं है. लेकिन जैसे ही उन्होंने बोट पानी में उतारी और आगे उसको रो करना शुरू किया, हम क्या देखते हैं? He is proud of his skill because the boat was moving straight. So अचानक से उन्हें मन में क्या लगा कि I am so good. So now he is proud of his skill of rowing. And then what did he do? He chose a point. उन्होंने दूर एक point देखा, दूर एक spot उन्होंने decide किया और क्या fix किया कि उस summit तक मैं अपनी बोट को लेकर जाऊंगा और फिर मैं वापस लौट कर आऊंगा. So he fixed his view upon the summit of a craggy ridge. उन्होंने दूर जो mountain दिख रहा था उस पर अपना focal point बना लिया कि यहाँ तक मुझे अपनी बोट लेकर जानी है. The horizon's utmost boundary, and that was far away. Horizon, जहाँ पे हम देखते हैं कि sky और earth they meet. That place is called the horizon. That is the boundary. So he decided that he is going to row his boat to that place. Far above was nothing but the stars and the gray sky. And when he looked above, there was nothing. It was just the stars and the gray sky. So there was no one to check him there. This is what he felt initially. कि बस ऊपर आसमान है, सामने खुला लेक है और दूर मुझे वो पहाड़ी दिख रही है. और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी बोट को वहां तक लेके जाएंगे. As he was very proud of his skill of rowing the boat. Although he is a boy of 10 years, mind it. So she was in elfin pinnace. So elfin pinnace, it is a small rowing boat. Lastly, I dipped my oars into the silent lake, and as I rose upon the stroke, my boat went heaving through the lake, through the water like a swan. So now what happened? Now once his destination is fixed, he started rowing his boat silently. And there is a simile in this.
where he has compared his boat to a swan. एक हंस के साथ में. आपने देखा होगा हंस जो होते हैं हमेशा लाइन में पानी में एक सीध में चलते हैं, है ना. तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि इनकी जो बोट थी वो भी एक स्वान की तरह सीधी लाइन में, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चली जा रही है. सो दैट इज द रीजन ही इज सो प्राउड कि बोट zigzag नहीं चल रही, उनको मेहनत नहीं, उनको कोशिश नहीं करनी पड़ रही, बल्कि बोट अपने आप ही सीधी जा रही है. Now line number 21 to 31. So when from behind that craggy steep, till then the horizons bound, a huge peak, black and huge, as if with voluntary power instinct, upreared its head. So you will see he has used the word huge twice. So जब किसी शब्द को 2 बार 3 बार यूज किया जाता है, लिखा जाता है, सो कारण क्या होता है कि वो एम्फसाइज करना चाह रहे हैं, वो इस बात पे जोर देना चाह रहे हैं. ह्यूज, बड़ी थी, बहुत ही बड़ी सारी एक पीक जो थी पीछे से उनको दिखाई पड़नी शुरू हुई. एज इफ विद वॉलंटरी पावर इंस्टिंक्ट अपरियर्ड इट्स हेड, जैसे वो अपनी मर्जी से वॉलंटरीली इट अपरियर्ड, यानी उसने अपना सिर जैसे पानी की सतह से अपने आप ऊपर निकाला हो. I struck and struck again. So you can see struck and struck again. There is repetition of the word that he is striking and striking again. पानी में बार बार और से वो strike करते जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं. And growing still in stature, the grim shape. And what do we see? That grim shape. That grim shape. It is gradually that coming out. And it was growing in stature, it was growing in size. धीरे धीरे वो जो पहाड़ जो था huge black color का, अब वो initially it appeared its head, उसने धीरे से अपना सिर पानी से बाहर निकाला था, और अब वो जो ग्रिम, वो जो डरावना सा शेप है, वो पानी के बाहर ऊंचा होता चला जा रहा है. धीरे धीरे पानी से बाहर निकलकर आसमान की तरफ ऊंचा होता चला जा रहा है. Towered up between me and the stars, and it towered up, it rose up to such a height that it reached almost the sky. Stars तक, इतनी ऊंचाई तक वो जो फिगर था, जो स्ट्रक्चर था, वो पानी में से बाहर निकल कर आ गया. And still, for so it seemed, with purpose of its own and measured motion, like a living thing. So what do we see? This particular peak, it started gaining height, बढ़ता चला जा रहा है साइज में, ऊंचा होता चला जा रहा है, as if it had a purpose of its own. ऐसा लग रहा था जैसे किसी पर्पस से वो बाहर निकलकर आना शुरू हुआ है. Measured motion, बहुत ही सदैव मोशन के साथ, like a living thing, as if it was not a mountain, as if it was a living thing. So with measured steps, it was moving forward. Strode after me. So it started as if it started walking towards me with measured steps. See, he is a child, a young boy. और इसको क्या दिख रहा है, जैसे पानी में से जब वो उसने बोटिंग शुरू करी थी, मे बी ही वॉज एट अ पर्टिकुलर इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, जहां से उनको वो दिखा ही नहीं था कि बीच में भी कहीं वहां पर एक पहाड़ी है. अब जब उन्होंने बोट चलानी शुरू करी, उस पर्टिकुलर एंगल तक पहुंचे तो उन्हें दिखाई पड़ना शुरू हुआ कि बीच में एक पहाड़ी भी है, और वो पहाड़ी जो है वो धीरे धीरे ऊंची होती चली जा रही है. जैसे कि नेचर का तरीका है उन्हें बताने का कि जो तुम कर रहे हो, बिना पूछे जो तुम ये बोट लेकर आए हो और आगे बढ़ते चले जा रहे हो इतने गर्व से, वो गलत चीज है. सो व्हाट इज ए फीलिंग दैट दैट पर्टिकुलर mountain, it was as if it was like a living thing. With measured steps, it was moving towards the poet. With trembling oars, I turned. So the word trembling, it suggests now he's scared, right? इतना बड़ा सारा कोई पहाड़ एकदम से बिल्कुल काला, ह्यूज, जो धीरे धीरे अपनी हाइट बढ़ाता ही चला जा रहा है, जैसे कि आपकी तरफ बढ़ रहा हो. सो डर तो लगेगा ही, वो भी छोटा बच्चा था. His oars started trembling and he turned his boat, and through the silent water stole my way back to the covert of the willow tree. And through the silent waters, still there is no one. He is the only one there who is rowing the boat.
He stole his way stealthily, very silently. He came back to the covert of the willow tree. He came back to the place where the boat was tied initially. Now from line number 32 to line number 44. There, in her mooring place, I left my bark. So in her mooring place, the original resting place. So mooring place here is the shelter where the boat was kept. I left my bark. Bark again means a small boat. And through the meadows, homeward went. And through the meadows, through the grassland, he went back home in grave and serious mood. So you can see again, grave and serious. दो ऐसे शब्द जिनका अर्थ करीब करीब एक सा है कि बहुत ही गंभीर मूड में he went back home. But after I had seen that spectacle यानी दृश्य, for many days, my brain worked with a dim and undetermined sense of unknowing modes of beings. So what happened? He had seen a spectacle. He had seen a scene which haunted him for many days. वो बार बार उनके ख्यालों में वही दृश्य आता रहा. His brain now, it was working, but with a dim and undetermined sense. चीजें उनके सामने उतनी क्लियर, उतनी लाइवली नहीं थी. क्यों? क्योंकि अननोन मोड्स ऑफ बीइंग, एक बहुत ही उनके सामने क्या चीज निकल आई थी जिसको वो डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे थे, जिससे वो परेशान थे कि ये कैसे संभव हुआ. राइट? सो उनका जो ब्रेन है वो डिस्टर्ब्ड है, वो परेशान है कि इस तरह की चीज उन्होंने देखी. Over my thoughts there hung a darkness. So his thoughts were all dark. Call it solitude or blank desertion. That is, he was not able to think straight. उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये किस तरह की घटना घटी. No familiar shapes remained. No pleasant images of trees. See, for him, nature was always a friend. He had enjoyed, he had basked in the glory, in the love of nature, right? But अभी क्या था? इस घटना के बाद वो जो familiar shapes थे, जो nature थे, पेड़, पौधे, आसमान, वो जो fields थी, अब वो सारे shapes जो थे उनको अपील नहीं कर रहे थे. No pleasant images of trees. He was not impressed by those pleasant images of sky or sea. No colors of green field. There was nothing which could soothe his brain or his heart. But huge and mighty forms that do not live like living men moved slowly through the mind by day and were a trouble to my dreams. So ये क्या बता रहे हैं? वो जो खूबसूरत दृश्य थे, जो लैंडस्केप्स थे, जब वो आसमान की तरफ देखते थे, ब्यूटीफुल कलर्स उनको दिखाई पड़ते थे, ग्रीन फील्ड्स देखते थे, वो जो कलर्स जो फील्ड में होते थे, सूदिंग इफेक्ट देते थे उनके दिल को, दिमाग को, वो सारी चीजें अब एकदम से खत्म हो चुकी थी. सिर्फ उनको कुछ थॉट्स थे जो कंटिन्यूस डिस्टर्ब कर रहे थे, और वो थॉट्स किसके थे? ह्यूज एंड माइटी फॉर्म्स, माइटी स्ट्रॉन्ग, जिनमें बड़े बड़े फॉर्म्स उनको दिखाई पड़ रहे हैं. That do not live like living men. So live like living. So you can see alliteration. जैसे कोई बहुत huge, mighty forms हैं जो उनके thoughts में आ रहे हैं, and they were just moving through his mind whole day. पूरा दिन उनको इसी तरह की चीजें, बड़े बड़े structures दिखाई पड़ते, और रात में जब वो सोते, they would trouble his dreams. That is, he would have nightmares. उनको सपने में भी यही डरावने स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ते थे. सो हमने क्या देखा इसमें कि नेचर ने, जिसको वो अपना फ्रेंड, फिलोसोफर, अपना गाइड मानते थे, जिसे वो अपना टीचर मानते थे, नेचर ने उन्हें एक लेसन सिखाया. लेसन क्या था? See the stolen boat. From the title itself you can make out that he stole something. He took it without the permission of its owner, right? So nature taught him that this is wrong. ये गलत है. और किस तरह से?
कई दिनों तक वो परेशान रहे, उनके दिमाग में वही ह्यूज फॉर्म्स आते, उनको डराते, जो नेचर जो उनको हमेशा प्लीजिंग इफेक्ट देता था, जो उनको बामिंग इफेक्ट देता था, उनका फ्रेंड था जिसकी कंपनी में वो खूब एंजॉय करते थे, वो चीज अब नहीं थी, और ये चीज काफी दिनों तक चलती रही. बट दिस इज हाउ नेचर taught him a lesson. Now coming to the structure of the poem, it is written in free verse, iambic pentameter. जो opening lines हैं, led by her, वहां आपने देखा her, here nature has been personified. Then he has used assonance in number of places, that is the vowel sound. He has used repetition, he has repeated the words to emphasize what he wants to say. And what do we see? That the poem, it has been bifurcated into 4 sections. उन्होंने इस पोम को 4 सेक्शन में डिवाइड किया इन 44 लाइंस को. किस तरह से? जैसे जो पहला सेक्शन है उसमें स्टीलिंग द बोट, ये इंसिडेंस है जहां वो चुराते हैं, बट वो मन से बड़े खुश हैं, although he is aware that it is something wrong that he is doing, but still he steals the boat. सेकेंड सेक्शन में हम जाते हैं, वो क्या है? rowing out into the lake. That is, he starts rowing the boat. He is proud of his skill, that he is such a good sailor. Then, as soon as he starts feeling proud of it, the third section, that is, he is confronted by the mountain. उनका सामना किससे होता है? एक mountain जो धीरे धीरे पानी से बाहर निकल कर आता है, और उन्हें क्या महसूस होता है वर्ड्सवर्थ को? कि जैसे वो उनके पीछे चला आ रहा है, जैसे वो उनकी तरफ आगे बढ़ता हुआ चला आ रहा है. वो बोट, he turns the boat so that he can tie it back, but उन्हें क्या लगता है? जैसे वो पीछे, उनके पीछे आ रहा है. So he is confronted by the mountain. And the last one, last section is that he learns the lesson. He learns the lesson. क्या lesson सीखते हैं वो इसमें? कि कोई भी चीज हो, अगर हमें लेनी हो, चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो, हमें उसके लिए परमिशन लेनी चाहिए. So this is how nature taught Wordsworth a lesson. So I hope आपको ये पोम समझ में आई होगी. Do go through the text by yourself, read it 1 or 2 times more, और आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है. Thank you very much. See you soon in another video.